Your first encounter with transportation as a profession? See, my first encounter happened when You're very curious about, statistics and things around you. Not really. Does money excite you, sir? Earning money and earning satisfaction. Are you satisfied with some of the changes that have happened in last? If we are able to get only these two things. What do you think about the freebies that we have, the free travel? All sheer nonsense. It has no value. So AbhiBus started Give a Quality Assurance. Do you think such programs are needed? Absolutely. Almost about 35 to 40% of our revenue goes into different taxes. Unfortunately, the kind of support what we expect from government is not coming up. यांच्या जन्मा पुण्यात झाला, पण हे राज्य करतात भारतभर. We have an esteemed guest here with us, one of the most respected person in Indian bus industry, president of BOCI and the founder of Prasanna Purple, Mr. Prasanna Patwardhan. Sir, welcome to the show. It's an absolute honor to have you here. प्रसन्ना सर, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा आपके फेवरेट टॉपिक के हिसाब से. यू लव गिविंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कैमरा. वी वर टॉकिंग अबाउट some of the amazing facts about Indian private bus industry. I was astonished to hear from you that some of the stats are mind-boggling. 660 times more passengers are driven by private operators in a day compared to the aviation. थोड़ा कुछ बताइए हमारे ऑडियंस के लिए. जब भी हमने बोकी चालू की तभी thought was to promote private buses and in general cabs and buses. So, मेरे समझ में ये आया कि हमारे लोगों को खुद को ही पता नहीं कि हम कितना ज्यादा काम कर रहे हैं जी. So that is why I started digging into some numbers, and because those numbers are not easily available anywhere, so you need to go into different statistics companies or go into Indian Railways, go into aviation statistics, and then find out what is happening. So if you look at the number of passengers carried per day by each mode. So all airlines put together carried 3 months back, that was the big news, 5 lakh people. 5 lakh passenger trips, you can say, because person name maybe 2 times in a day may occur. So it's a passenger trips, what we call it as. Indian Railways carry about 2 crore 40 lakh passengers per day. All metros put together carry about 1 crore 14 lakh passengers per day, out of which almost I think 50% are carried by Delhi Metro. In Indian Railways also 70 lakh are carried by the suburban in Mumbai itself and balance on long distance services. When it comes to buses, state transport undertakings carry somewhere around 7 crore passenger trips per day. And when it comes to private, it is 33 crores. So that is the kind of contribution what we are making to the society, or that is the kind of difference what we are making to people's life. So this includes school going children. This includes employee transport. This includes intercity, intracity, all kind of buses, tourism buses. So this is the number. Unfortunately, commensurate to that number, the kind of support what we expect from government is not coming up. If you look at airlines, the kind of budgets they have, the kind of support government gives them, or even in buses also, if you see the kind of support what STUs got in terms of getting infrastructure. Or their losses are funded by government. In our case, we take loan on our head, keep our houses as collateral. We pay taxes. Almost about 35 to 40% of our revenue goes into different taxes, which includes even taxes on diesel, cess, etc. and passenger transport. But the kind of services what we are getting in return from government, not many buses are given access to even public transport. Bus transport, bus terminals. So that is the plight we are facing today. So hope this changes someday. Do you think this is more of a phase? At least what statistic that I've heard is every day 30-40 kilometers of
highway roads are getting built. We have almost 50-60,000 kilometers of road been built in last 10 years or so, which is equivalent to since independence first 60-70 years. So at least the first phase was to build the road infra, and probably do you think some of the fund flow will start coming into the local transportation and boarding and dropping points? I would say the kind of road infrastructure what we are developing is mostly for more conducive for people, those who are having their own vehicles. About 80% of our people, previously that number was high, now it is coming little down. 80% of Indians, they do not own any vehicle, they do not have capacity to buy any vehicle. They are dependent on public transport, which means even if you build excellent infrastructure, which is roads, because when we talk about infrastructure, it is only road, overbridges, underpasses, so mainly roads or access. So what access do they have? If they want to go from point A to point B, can they walk on the road, or how will they go from point A to point B? So for them, only road infrastructure means nothing. They require some vehicle that to on sharing basis to go from place A to place B. So that is being given by public transport. And for them, road is, I would say, 50-60% support in terms of access. But unless you have roadside amenities, unless you have bus ports or multimodal terminals, because integrated transport is very important. If you get down from railway, for nearby town, you can go by bus. Or if you get down from air, nearby town, you can go by bus. So last mile connectivity is always been by road, and which is mostly by bus for these people. Right. And for them, whatever road budget we have, that doesn't suffice their purpose. Their purpose is to go from place A to place B. How you take them, they are not much worried. Right. They just want to go. That is why I say at least 25% of the road budget should be invested into building infrastructure for public transport, which means multimodal terminals, bus terminals, wayside amenities, pick-up and drop area development. So this kind of investment is not happening. See, railway budget, they don't build only tracks. They build railway stations Absolutely. also. So they build, even technology is also built by that budget. But when it comes to road, entire budget is spent only on building roads. True. And not on anything else. Right. I know you love talking about statistics. Let's turn the clock and let's go back. I can't believe that you're 63, right? But it all started, right, in 80s, early 80s. So tell us your first encounter with transportation as a profession. I know that your father was into similar business, but you were up to something else. How did it all start? See, my first encounter happened when I went on a trip as a driver on a car, which happened suddenly because there was no driver and we were supposed to supply car, and I was in college that time, not even in business. So I took that car to Mahabaleshwar, where that guest was supposed to go, and he stayed in Mahabaleshwar club. I stayed in a hotel. So my first encounter is my bill of hotel was more than his bill. And when he offered me money, which was supposed to be a tip, which I came to know afterwards, I refused to take it because I did not know that it is a tip. So this is the kind of environment which I encountered when I entered into this business. Right. And I think maybe not many people know about your family background also. If you're comfortable, maybe we'd like to know a little bit about your family also. You come from a very well-educated family. Mataji has been very well-educated. She's been a teacher also, and your brother as well, who's been a top scholar. So was it always in the family that, you're always very number-driven, you're always on top of things, you're very curious about, statistics and things around you? Not really. Actually, our family is of a mixed culture. So my father was in business. So business was always in our blood. But since my mother was a teacher, that angle also must have been somewhere inside me. So that made me more curious to learn different things every now and then. Even today, I keep on learning. So I would say that I am a good student of public transport. And that is why I keep on learning what is new and what is happening around the globe in whatever field I work in. So it's a mixed culture I brought up. So that is why you will see both as a transporter also, when I
go on workshop or I go on office, I become transporters. But when I come on office, then I start thinking how to improve. What are we actually doing here? And that's what made me curious to know about all these numbers. And that's when I started studying those numbers. So प्रसन्ना सर, मैंने जब आपको पहली बार देखा था 6-7 साल पहले, तो my first impression was very stiff, very disciplined, very professional, like a father-like image. But as I've known you more, you're actually a very family person. Your relationship with your family is something that inspires me a lot. Tell us something about your recent family addition. Your sons are married. You have beautiful grandkids. Tell us, how do you spend your time at home? See, I grew up in a joint family, and which was only 24 people living together. So I always been a family man. And today I stay with 2 of my sons and 2 granddaughters, 1 grandson, and I enjoy playing with them. So my pastime, if you ask me, is playing with them. I love that. And that, of course, does not give me much time to do anything else, seeing movies or something like this. But I love that. So it's a fun living together. So ये जो cultural roots हैं, ये I'm sure you would have learned from your father and he would have learned from your father, and I was just observing that you have beautifully passed it on to your sons also, and you were sharing a lot of good memories and जो घरेलू स्टोरीज होती हैं, तो कुछ हमारी ऑडियंस से शेयर कीजिए कि कैसे आपने कुछ जो हमारी कल्चरल चीजें होती हैं वो आपने अपनी फैमिली में आगे इनकलकेट की. द वे योर किड्स गॉट मैरिड एट राइट टाइम, लाइक हाउ यू गॉट मैरिड एट अ राइट टाइम. कुछ maybe a lot of audiences today would really get inspired about how families can pass on their cultural heritage to the next generation. See, first thing, I believe that staying in joint family has multiple advantages over staying in isolated family or nuclear family, what you call it as. Every member of the family is giving next generation some inputs, and that makes them perfect. So when I grew up in joint family, I learned quite a few things. Like on one side, how do you behave with people of different ages? How do you manage people having different personalities? So that nucleus families does not teach you all this. Joint family always teaches you all this. So when you stay in joint family, it automatically happens. Like every evening there will be a prarthana. So Bhagwan, uski stories, Mahabharata, Ramayana, Shivaji, all these stories are told by seniors to juniors, like I tell my kids. So this makes them, I would say, a little more tolerant and grounded person. Because in joint family also, not every member of the family of same financial status. That also differs in joint family. So they understand both the things. When you have money, how to behave. If you don't have money, how to behave, and how to behave with each other. Right. So that in joint family automatically happens. There is no different effort required to teach them. So that is why I always tell my sons that it is better to stay in joint family, and your children will become better as a human being if you stay in joint family. Yeah. Does money excite you, sir? Honestly speaking, not much. But what excites me more is to achieve something, to do something. See, my first responsibility is towards myself, then my family, then society or nation in general. But when it comes to business, I don't think you should do business only for getting money or for earning something for self-interest. Right. Because that is very short-sighted view of looking at the things. If you do business with larger perspective of adding some value to the society also respects it, and they also give you equal response. So I always believe that whatever you give to customer gives you back. Right. All entire my growth story, if you look at it, it is from customer's perspective. So we started as a taxi operator, then bus operator, then tourism operator, then cargo operator, then motel operator. Right. All this happened because people asked me to do it. So listening to people always helped me. So in business, I think it has to be a balance of earning money and earning satisfaction. At least for me, only money does not give me satisfaction. Right. And sir, I've observed, and we were discussing earlier also, most of the revolutionary
they give a few decades before they bring a big change to the society. I've heard you a lot on the stage, and you've always talked about policies and the loopholes in the system and how ease of doing business probably can get better for bus operators. I'm at least very proud as an industry player to see that you have given almost 4 decades. Are you satisfied with some of the changes that have happened in last 1 or 2 decades? I at least see that a lot of things have changed for good. Operators are much more confident in starting a new bus. What is your current level of satisfaction from the changes that you are seeing at least the policy level? See, I think a lot of things have changed and changed for better. See, for example, take example of your services. Say AbhiBus. What you do is online ticketing. So that has certainly contributed to growth of the society, growth of the business. Absolutely. So people, those who could not go and buy ticket and then again go for the bus stop, so they have started buying online, and now it has become so convenient that you have increased that pie size. So that is your contribution to the society. I always tell our colleagues that if we give better services, person who is going to say Mumbai or Nagpur or Bangalore or any other destination, if he wants to go once in a year, he might go twice, thrice in a year. True. So that way, they will get more business, more connecting with families also. I think that has changed quite a lot. And I am only not very satisfied with the kind of infrastructure what we are getting. Apart from that, some changes in the law also has happened, like one nation, one tax, one permit. We fought for almost 15 years. After that, we got that. Then sleeper coach or different variety of coaches are now available. So I am quite satisfied with the changes happened in the field of bus transport. And I hope that someday even balance changes what we expect that to happen. My dream is to make public transport tax-free because it is for general public and much better infrastructure than what we have today. Right. If we are able to get only these two things, I can assure you that bus will be the best mode of transport and people's first choice and not the last choice like today. That would be their first choice. And whatever people, 33 crore people we are carrying today, it can double in 5 years. What do you think about the freebies that we have, the free travel that a lot of state governments are starting? All sheer nonsense. See, anything if you give free, it has no value. I say if you want to give free, rather than giving free, give them pass and give them benefit along with pass and ensure that it goes to a right person who deserves free. Absolutely. So anybody taking free, so now for example, senior citizens free. So he is coming down from Mercedes and you are asking him free. True. He may not go, but you are giving an opportunity to travel free. Yeah. Similarly, for ladies, 50% discount. Why do you need 50% discount for people, those who are traveling in Volvo or high-end buses or luxury buses? Not required, no. True. Ordinary buses, ordinary people, real poor people, you should give. But rather than free, I say charge them 1 rupee. Right. You should charge them something. Yeah. So only free, I don't believe in giving free. Sir, I saw your control center. I think you're a technology freak. I mean, I'm using that word loosely because you love technology, and for an operator that he's been running for 3-4 decades, the kind of surveillance system that you have for your own buses is truly remarkable. I think at AbhiBus also we believe in the use of technology and how we can solve complex problems, right? I know that you're very passionate about quality of service. So AbhiBus started something called Assured, where we give a quality assurance. We basically assure you that everything in bus will be right. The staff will behave well. The bus will be closer to on time, at least maybe not 5 hours late and all. Do you think such programs are needed to give customers that confidence that traveling in buses can be predictable? Absolutely. I mean, there is no doubt. Safety, security, comfort, these are the things. Fortunately, Indians, they have very less expectation, and that is why we are also surviving. Let me be very honest with you. If you give them basic things, good service, courteous service, what they look at is your time performance, your driver's behavior, and cleanliness. If these 3 basic things you give them well, they will come to you. Right.
So one of the important thing which I might have missed, but most important is training your crew and drivers. And not only training, but creating new drivers is also becoming essential, because there is tremendous shortage of drivers. Right. And because of two things, one is they are not treated well also. So drivers are not treated well. So 50% blame lies on to us, Right. because we also need to take a lot of efforts in ensuring that they are well respected. Absolutely. And 50% blame will go on government, because there are no infrastructure. Every now and then they are harassed by police, RTO, or whoever stops them on road. Right. So that also needs to be changed. So respect is one lacking thing. That is one responsible factor for people not coming into this profession. And secondly, there is a false perception about status. Right. So we as Indians are highly status conscious, and we believe certain things are to be done by people, those who are coming from a different background, and they deserve that. Right. And I am not supposed to do that. True. Once I become graduate, how can I become driver? True. Once I achieve certain level of financial status, I just cannot become driver. True. So that is the another reason why we are not getting drivers. So I hope this will change. Ola, Uber changed that to some extent, because graduates, they started working on cars. But in buses, it has not happened. Right. Let us hope it will happen someday. Sure. Also, Prasanna sir, we started a program called New Buses. We started predicting the age of the bus even before you book the bus, right? It came out as a surprise to us, because most of the customers now prefer to book new buses through AbhiBus, right? Which is also maybe an epitome that customers want to have new buses. They want to have more reliability, or maybe more assurance about that the bus that I'm boarding is going to be new. And I think what I've noticed is, ever since that Air India crash happened, which was a very old jet, a lot of people want to know the age about their buses. While we're running this program, we realized that a lot of operators, even if they want to buy new buses, they can't procure because of various capital deficiencies. Take us through a little bit about what is the situation of money market in today's time. How easy or difficult is it for a new bus operator, or even an established operator, to get a new bus, so that they are a little bit more prone to providing quality service? And I'm assuming that old bus means relatively poorer quality. So I will answer this in two parts. One part is old bus and quality of bus. Right. So I will give one example. I had gone to Hong Kong, and there I met that Kowloon bus service, and they took me on the ride to their one of double decker. And after taking a ride on that double decker, the person who was guiding us, he asked us, "What do you think would be age of this vehicle?" So I said 4 or 5 years. So he said 17 years. Wow. So that bus was 17-year-old and was looking like new, and working like new also, not only looking like new, Right. but working like you. So it all depends on how well you maintain your vehicle, True. your fleet. So that is one part. Now coming back to second thing, which is a new bus and getting a new bus by financing it. Pre-COVID, it was comparatively easy. Post-COVID, I don't know why bankers are so hesitant to fund buses. Right. And that is why any new person getting, or even people like me also, getting buses from bank financed is become difficult. It is not that easy what it used to be. Previously, they used to literally queue outside your office to give you finance. Today, they are hesitant to give finance even to big operators. Right. So, but slowly it would change, because they also are coming out of the shock. So, slowly it would change. As far as equity funding, if you are referring to, equity funding compared to previously, because when I took funding in 2009, that time funding was very, very rare. Today, there are a lot of funds are willing to invest into this, but mostly in green energy. Yeah. So they are not willing to fund your diesel buses. Right. So Prasanna sir, आप quite a foodie. आप कुछ अपनी बचपन की फूड रिलेटेड स्टोरी बता रहे थे, हॉस्टल टाइम की, कुछ बताइए उस बारे में. अरे
हमारा जॉइंट फैमिली था जी सो वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर. तो 24 पीपल, मॉर्निंग से खाना चालू, रात देर तक. हॉस्टल के बच्चों को घर का खाना बहुत पसंद रहता है. आई यूज्ड टू ड्राइव स्कूटर दैट टाइम. तो स्कूटर में पेट्रोल के लिए पैसा नहीं रहता था, तो हॉस्टल को दोस्त को बोलने का, तेरे को घर पर खाना खाने के लिए लेके जाता हूँ, 1 लीटर पेट्रोल डाल दे. वैसे ही आम पड़े रहते थे, तो कुछ भी उठाओ कुछ भी खाओ, और हमारे घर पर पता ही भी नहीं चलता था कि 2-3 आदमी खा के गए घर के. इतना खाना बनता था जी. बट वैरायटी ऑफ फूड ना, क्योंकि हर एक की अलग अलग कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती थी, तो उसके हिसाब के सबको सब टाइप का खाना मिलता था जी. दैट वाज फन. आज भी मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है, तो खाने को तो भाई बहुत अच्छा मिलता है. मैं पूछने वाला था सर, लाइक दे से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, and madam is also very active in your business. Tell us Yes. something about her support and what she's up to. So when our company was growing, she was growing with children. जी. और मैं तो पूरा आउट स्टेशन काफ़ी होता था मेरा, आज भी होता है, लेकिन तभी आई वॉज वेरी वेरी बिजी टिल. सो मेरे बच्चे बोलते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात हम बड़े होने के बाद ही हो गई डायरेक्टली. जी. उसके पहले ज़्यादा हम आपको मिले ही नहीं. तो शी टुक एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस. जी. अदरवाइज आई कुड नॉट हैव ग्रोन दिस बिजनेस दिस राइट. सो दैट वाज हर फुल सपोर्ट. उनका एजुकेशन, घर का खाना, घर का पूरा, मुझे कुछ मालूम नहीं जी. तो वो पूरा उसने संभाला. अच्छा सर, वी आर आल्सो इंटरेस्टेड हाउ यू मेट. प्लीज टेल अस अबाउट दैट स्टोरी आल्सो. सो आई एज अ बास्केटबॉल प्लेयर. जी. सो वो बास्केटबॉल, उसकी छोटी बहन भी बास्केटबॉल खेलती थी जी. एंड हर बेस्ट फ्रेंड वो भी बास्केटबॉल खेलती थी. जी. तो उनके साथ वो आ जाती थी डेक्कन जिमखाना क्लब पे, तो वहाँ हम मिले और फिर शादी कर ली. You got married very early and your Yeah. kids also. I want to know about that when story. I met her, that was that time I was 20 and she was 17. Wow. तो 20 साल की थी वो जब वो ग्रेजुएट हो गई. तो ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत मैं 23 साल का था जी. तो शादी कर ली हमने. And you made sure that your sons also got married on time. तो 30 साल, मैं 30 साल का होने के पहले मुझे 2 बच्चे भी हो गए. और मेरे दोनों बेटे की भी शादी आज के कंपैरिजन में जल्दी हो गई. सौरभ की 25 में हो गई और हर्ष की हो गई 27 में जी. तो मैंने दोनों को डेडलाइन देके रखी थी कि 25 के पहले अगर तुमने शादी की तो तू जो लाएगा वो लड़की, 25 के बाद मैं जो लाऊंगा वो लड़की. तो इसके लिए उसने 25 के पहले पी. दूसरे ने जरा 2 साल का एक्सटेंशन लिया, बोला अभी जमाना बदल रहा है, आप भी बदल जाओ जी. तो उसने 27 में की. तो दोनों की लव मैरिज है उनकी भी. सौरभ की बीवी जो है शी इज फ्रॉम केरला जी. तो वो भी खाना मिलता है. बहुत अच्छे डोसे वगैरह बनाती है वो जी. और साउथ का खाना वो बहुत अच्छा बनाती है. तो वो भी एक नई वैरायटी आ गई हमारे घर में. जी. जी. सर, एक अच्छे लीडर की एक पहचान होती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता. मुझे 2 चीजें बहुत प्रभावित की. एक तो आपके ऑफिस में हमने देखा स्टाफ, हम फुटेज भी डालेंगे सामने की ग्राउंड फ्लोर पे सब महिलाएं हैं, बहुत अच्छा लगा देख के. और आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जब आप स्टाफ सिलेक्शन करते हो तो आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो. आई वुड वांट आवर ऑडियंस टू हियर दैट आउट. नहीं, हमारे यहाँ वो कॉलम या वो फील्ड ही नहीं है. जी. आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप कौन सी एरिया से आते हो, आप कौन सी भाषा आपकी मदर टंग है वगैरह, ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं. जी. द ओनली थिंग व्हाट वी बिलीव इज मेरिट ऑफ दैट पर्सन. जी. वो एज अ ह्यूमन कैसा है, जी. वो अच्छा है, उसका क्वालिफिकेशन भी हम इतना नहीं देखते हैं जी. जितना उसका कस्टमर के साथ बर्ताव, कस्टमर के साथ बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस, ये हम देखते हैं. जी. एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट बिजनेस. बल्कि मैंने आपसे पूछा पर्पल के बारे में तो आपने मुझे बड़ी अच्छी एनालॉजी बताई. तो जरा ऑडियंस को बताया कि ये नाम पर्पल कैसे आया. See, our original name is, after my birth, my father named it as Prasanna Travels. जी. So that continued till 2009. In 2009, when we got our first funding, that time we decided to go pan-India, and that too in government contracts. So while going into government contracts, I felt people, if I go with this name, then people would say that ये साउथ की कंपनी आई, क्योंकि प्रसन्ना इज वेरी साउथ इंडियन नेम. सो नॉर्थ में मुझे तकलीफ होगी.
तो मैंने बोला कोई न्यूट्रल नेम ढूंढना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कहाँ की कंपनी है क्या है। जी। तो फिर अंग्रेजी नाम ढूंढा, लोगों को इंटरनेशनल भी लगना चाहिए थोड़ा। तो हमने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं सब एम्प्लॉयज को बोला कि सजेशन दे दो आप क्या क्या नाम आप देना चाहते जी। हो। तो काफ़ी नाम आए, 2,500-3,000 नाम आए। फिर हमने 2 वर्कशॉप किए और एलिमिनेशन करते गए, ये नाम नहीं चाहिए, ये नाम नहीं चाहिए, और पर्पल पे आए। तो पर्पल पे आए, उसके 4 रीजन है। पहला रीजन, पर्पल इज नॉट कलर बाय इटसेल्फ, इट्स अ फैमिली ऑफ कलर्स। और हम ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म में सब फील्ड में है, स्कूल है, एम्प्लॉय है, इंटरसिटी है, इंट्रा सिटी है, हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विसेज है, हर टाइप के सर्विसेज में हम है। तो हमने सोचा कि ये सूट होगा हमें। दूसरा, पर्पल अगर आप कलर देखेंगे तो इट वाज कलर ऑफ रोमन रॉयल्टी, जी। जो बहुत रेयर कलर था। तो हम ये भी लोगों को बोलना चाहते थे कि हम आपको रॉयल ट्रीटमेंट देंगे। और एट द सेम टाइम पर्पल आप देखेंगे लास्ट 10-15 साल में पर्पल ज्यादा दिखने लगा है जी। तो ये मोस्ट मॉडर्न है। तो ना कि हम खाली आपको रॉयल ट्रीटमेंट देंगे, वी हैव एंशिएंट रूट्स बट वी आर आल्सो मॉडर्न इन आवर थिंकिंग। जी। दैट्स व्हाई यू यूज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये कारण भी पर्पल हमको ज्यादा पसंद आया। तीसरा कारण, इंटरनेट पे आप देखेंगे पर्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो पॉजिटिव इमोशंस देता है, तो वो भी एक पॉजिटिव हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो जी। पर्पल। ये ऑरेंज नहीं, भगवा नहीं, जी। हरा नहीं, जी। नीला नहीं, एब्सोल्युटली। लाल नहीं, ये कोई भी पार्टी ने लिया नहीं है, ये कोई भी रिलीजन का सिंबल नहीं है, जी। या किसी भी कास्ट का सिंबल नहीं है। जी। और इसके लिए हमने बोला कि ये सबसे बढ़िया हमारे कंपनी के लिए है, क्योंकि हम भी यही मानते हैं। जी। तो इसके लिए पर्पल हमको बहुत सूट हो गया, इसके लिए हमने पर्पल नाम लिया। फैंटास्टिक सर। पढ़े लिखे लोगों के लिए बस चलाना एक अवधारणा है कि उतना आसान नहीं है, और आपने कहीं ना कहीं वो अवधारणा 80 के दशक में बदली भी है। जैसे मैं एक अभी ऑपरेटर से मिला, वो पॉडकास्ट की हमने उनके साथ, उन्होंने कहा यार मुझे लोग सीरियसली नहीं लेते थे, मैंने दाढ़ी रखी। पीपल यूज गाड़ी एज एन एडवांटेज, आई यूज दाढ़ी एज एन एडवांटेज, ताकि लोग मुझे सीरियस लेना शुरू करें। हाउ डिफिकल्ट और ईजी वॉज इट बैक इन द डे फॉर यू, you know, a handsome looking guy, tall, very fair skin? Was it easy or you found some difficulties early on? No, I don't think people judge you on the basis of what you are. What you do is more important. Right. So इसके लिए एक स्टोरी बोलता हूँ। When I was in new in business, मेरे से एक बड़ी कंपनी का एक ओनर मेरे से सीनियर था, लेकिन दोस्त था, दोस्त बन गया था तभी बिजनेस में। तो वन डे ही सेड, प्रसन्न, आई वुड लाइक टू चेंज माय बिजनेस। यार मैंने बोला क्यों? तो बोला मेरे बेटे को बहू कौन देगा, ट्रांसपोर्टर के बेटे को बहू कौन देगा। तो मैंने उसको बोला कि ये लफ्ज कोई बाटा के लिए यूज कर सकता है क्या? जी। तो योर स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच बिजनेस यू आर डूइंग, ट्रू, it is dependent on how you are doing business and at what level you are doing that business. True. तो मैंने बोला कि मैं ये बिजनेस अगर छोड़ने की सोचूंगा भी जी, तो भी नंबर 1 होने के बाद ही सोचूंगा, तब तक सोचूंगा नहीं। राइट। तो स्टेटस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ यू बिहेव विथ पीपल, what kind of business you are doing in what way, rather than what business by itself, और वो क्या लेवल का बिजनेस आप करते हो। जी, राइट। प्रसन्ना सर, आपको क्यों लगता है कि भारत में कोई इंडिगो इक्विवेलेंट बस ऑपरेटर नहीं है? नहीं, अभी तक तो कानून की वजह से नहीं थे। अभी ऑल इंडिया परमिट, वन नेशन वन टैक्स वन परमिट आया है, तो अभी आपको दिखने लगेगा कि ऐसे ऑपरेटर्स उभरने लगेंगे। जी, बट वो 3 सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं जो एक ऑपरेटर को बढ़ने से रोकते हैं, दबाते हैं नीचे की तरफ? ये स्टेट सब्जेक्ट है जी। ट्रांसपोर्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो हर एक स्टेट के रूल्स अलग है, रेगुलेशंस अलग है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स है जी। तो उनको उसको प्रोटेक्ट करना है। सो दे आर इन डायलेमा कि उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करने जाते हैं उस चीज में प्राइवेट को तकलीफ देने लगते हैं तो प्राइवेट भी मर जाएंगे। तो वो इसका डायलॉग है हिंदी पिक्चर का कि इसको क्या लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो
ये इसको मरने नहीं देगा और पानी इसको जीने नहीं देगा, जी 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 ऐसी सिचुएशन है। जी जी। वो हमको मरने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। बट जो प्राइवेट बस इंडस्ट्री के रेजिलियंस है वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं तो कई बार अक्सर सोचता हूँ, क्योंकि हमने कोविड देखा, डिमोनेटाइजेशन देखा, वो उस गेंद की तरह है जिसको आप जितना स्विमिंग पूल में नीचे डालोगे उतना और तेजी से बाहर निकलता है। और वो एक मिसाल है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बरकरार है, जबकि बहुत सारी एसटीयूज हमेशा से ही लॉस मेकिंग रहेंगे। तो प्राइवेट ऑपरेटर्स में वो कौन सा ऐसा डीएनए है, रेजिलियंस है, जिसके चलते वो दे स्टे अफ्लोट, दे डोंट डाई, दे रिफ्यूज टू डाई एंड ऑल्सो रिमेन प्रॉफिटेबल? See, one of the thing is it is a necessity. Intercity particularly is a necessity. जी स्कूल बस, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट, ये सब नेसेसिटीज है। जी तो ये कभी भी मरने वाली है नहीं। जी ये लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग एज लॉन्ग एज आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, रिक्वायरमेंट इज ग्रोइंग, वी विल ऑल्सो ग्रो। So एब्सोल्युटली it will never die. And secondly, particularly in intercity, since it's a cash business, जी it does not allow you to die because Right. some money keeps on coming every day. सर्कुलेशन, यस So you can circulate that money and keep afloat. एब्सोल्युटली। So that is why people are better off in this business. जी तो प्रसन्ना सर, ऑलमोस्ट 5-7 हजार के करीब करीब जो है इंटरसिटी एक्टिव बस ऑपरेटर्स रहते हैं अभी बस पे, जो लिस्टेड है, एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि हर महीने जो है कुछ दर्जन ऑपरेटर नए जुड़ते हैं। आज किसी एक फ्रेश ग्रेजुएट को, जिसके हु इज एबल टू रेज सम मनी एंड बाय 1 or 2 बसेस, आप कैसे उसको सजेस्ट करोगे कि वो कैसे स्टार्ट करे अपनी जर्नी? पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है समझने की आवश्यकता है। कोई जगह आपको लग्जरी बस सर्विस ही चाहिए, लोग जाएंगे नहीं। कई जगह आपको ऑर्डिनरी बस चाहिए, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में अगर वो चलाना चाहता है तो नॉन एसी बस भी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है ये सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। मेरा एग्जाम्पल बोलता हूँ यहाँ। मैं जब भी बिजनेस में आया तो पहले एक ही परमिट मिला, तो मैंने सोचा अभी कौन सी गाड़ी चालू करूँ। तो मैनेजमेंट से आया था, तो एसटी स्टैंड पे सब लोग बिठाए, 3-4 एसटी स्टैंड पे लोग बिठाए सर्वे के लिए कि कौन सी जगह जाने के लिए लोगों का ज्यादा रश है। तो उसका आंसर आया महाबलेश्वर, क्योंकि वो अप्रैल में सर्वे लिया। महाबलेश्वर इज ए हिल स्टेशन। तो चालू किया महाबलेश्वर चालू करने के बाद 15 जून आया, आदमी नहीं जाने के लिए ना आने के लिए। तो मैंने सोचा अभी कैसा करेंगे। फिर दूसरा पार्टनर ढूंढने लगा, क्योंकि नाइट सर्विस को 2 बस कम से कम लगती है। फिर दूसरा भी ऐसा मेरे जैसा एक मुझे मिला, तभी पुणे जलगांव बस सर्विस चालू की हमने। तो इस तरीके से पहले समझने की आवश्यकता है, लेकिन वो समझना भी ठीक तरह से समझना चाहिए, मेरे जैसा नहीं। जी दूसरा, कौन सा टाइप का व्हीकल है ये देख के समझ के आपने ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। जी अभी तो आसान हो गया है सर्वे। आपके साइट पे जाएंगे तो सर्वे समझता है कहाँ कहाँ बस चल रही है, कितनी बस चल रही है, क्या ऑक्यूपेंसी पे चल रही है वगैरह, आसान है अभी। तो वो स्टडी करके वो कर सकता है। और उसको मैं हमेशा हमारे सब लोगों को बोलता हूं, जो कोई भी बिजनेस में आप हो, उसका कायदे कानून का ज्ञान आपको होना चाहिए। जी यू कैनॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द लॉ। तो फिर पुलिस ने किधर ही आपको पकड़ा तो आप खाली पैसा निकाल के दे देते हैं उसको। जी आप समझते ही नहीं कि ये गलत कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। राइट। हम हमेशा समझते हैं हम ही गलत कर रहे हैं और वो सही हमको फाइन कर रहा है। असल में एक चीज उल्टी है। जी उसको भी बहुत सारी चीजें मालूम नहीं रहती। उसको अगर आपने 2-3 क्लॉज बोल दिए ना तो वो छोड़ देगा आपको। जी तो कायदे कानून का ज्ञान होने की आवश्यकता है। थर्ड थिंग इज यू शुड नो व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज एंड हाउ टू यूज इट। जी किसी को भी अगर मैं तलवार देता हूं तो वो अच्छी तरीके से लड़ेगा इसकी गारंटी नहीं। तलवार तो अवेलेबल है दुनिया में सब जगह, जी लेकिन वो लेके अच्छा आदमी बन सकता है क्या लड़ने वाला? वैसे ही टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एवरीवेयर, हाउ टू यूज इट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो अंडरस्टैंड करने की भी आवश्यकता है। जी तो ये 3-4 चीजें अंडरस्टैंड करके फाइनेंस समझ के लेना चाहिए कि भाई गाड़ी 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब भी टायर, इंजन ये सब काम पे आएगा तो इसको कितना खर्चा आने वाला है, वो समझ के कॉस्टिंग करना चाहिए। ना कि आज डीजल के पैसे इतने जा रहे हैं, ड्राइवर को इतने पैसे जा रहे हैं, टैक्स इतना जा रहा है, तो मैं इतने में गाड़ी चला लूंगा। जी मेरे महीने पहले तो जो हिसाब से मैंने गाड़ी डाली थी उस हिसाब से तो मेरा घर सोने का होना चाहिए था। मैंने सोचा 36 बस नंबर, ये 60 रुपए का टिकट चालू है, 36 × 60 दिन में 2 ट्रिप चलाऊंगा
तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 ट्रिप्स वगैरह, तो इतना पैसा और खर्चा इतना कम है जी तो 30 रुपए में चलाऊंगा तो भी चलेगा जी। वैसे नहीं होता। So do you think that's how they miscalculate sometimes and they मेनी टाइम्स न्यू पीपल मिसकैलकुलेट एवरीथिंग। ऑक्यूपेंसी समझ में नहीं आती है, जी गाड़ी का खर्चा कितना लगने वाला है ये समझ में नहीं आता है, जी अदर एक्सपेंसेस जो है जो हिडन है हमारे देश में, जी जो गाड़ी चलाने के लिए देने ही पड़ते हैं आपको, जी वो समझ में नहीं आते हैं। तो ये सब समझ के पहले फिर गाड़ी डालने की आवश्यकता है। जी जी। तो न्यू एज ऑपरेटर्स की बात करें तो ईवी जहन में आती है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू यू थिंक विल हैव अ गुड सक्सेस फ्रॉम हियर और डू यू थिंक इट्स स्टिल एट अ नेसेंट स्टेज वेयर यू वुड वांट टू सी एज अ बस ऑपरेटर योरसेल्फ, हाउ डू यू सी ईवी बस एज अ ऑप्शन? See, we have no option but to go by electric, EV or hydrogen or whatever new fuel comes in, because 60% of our country's foreign exchange is going towards fossil fuel. Right. So we'll have to change that. And we should be helping government in doing that. जी So we'll have EV vehicle numbers growing day by day. Today, compared to 5 years back, it is much better. Yeah. But still, I would say you should not go in big numbers immediately. जी You should test the waters and then grow. Sure. So, हमारा last section, Prasanna ji, about vibe check, which is more of a Gen Z lingo. We'll throw some of the popular Gen Z terms, and you yourself, I would appreciate that are very up to date about what is happening around. So, हम आपको कुछ एक शब्द बोलेंगे, आपको अपनी immediate reaction देना है कि उस शब्द का Gen Z terminology में क्या मतलब है. Lit. This bus is lit. मैं बहुत अनएजुकेटेड हूँ इसके बारे में। जी, तो एक शब्द होता है कि आजकल Gen Z यूज करते हैं, दिस बस इज लिट, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? लेट यानी मुझे तो लगता है कि लाइट लग गई अंदर सब जगह। अच्छा, इस बस ने मुझे घोस्ट कर दिया, तो घोस्टिंग से आपको क्या समझ में आता है? ये बस ने मुझे घोस्ट कर दिया, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि घोस्ट यानी बस को घोस्ट कैसे कर सकते हैं। मास्क करेंगे तो एक बार समझ में आता है कि ये हाइड कर दी, दूसरी बस लाई वगैरह। जी जी। वैसे ही अगर घोस्ट का मतलब रहेगा तो मालूम। हाँ, तो मतलब मैंने उसको इग्नोर कर दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मतलब वी अच्छा, घोस्टेड ईच अदर। ओ तो अच्छा, दिस बस इज बिग, बिग से आपको क्या समझ में आता है जेन जी टर्म में? 15 मीटर बस। जी जी, नहीं, हम यहाँ पर वॉल्वो 9600 की बात नहीं कर रहे, मतलब ये बहुत ही हैपनिंग है, ये बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, अगला है कि आई एम बसिंग इट। इस बसिंग से आपको क्या समझ में आता है? आई विल बस इट फॉर टुमारो। ये बस्ट समझ में आता है, बसिट क्या है समझ में नहीं आया। जेन जी लिंगो में इसका अर्थ होगा कि मैं बस बुक करने जा रहा हूँ, तो अगली बार जब आपका पैसेंजर कहेगी तो आप कहेगा बस इट या प्रसन्ना पर्पल इट, राइट। अगला है कि दिस बस इज वेरी सस। सस से आपको क्या समझ में आता है? सस जी, अरे ये तो बहुत अलग अलग ये है, मेरे बेटों को पूछ सकते हैं आप। अगली श्रृंखला में हम जरूर सौरभ भाई और हर्ष भाई से इन बारे में पूछेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग अ लॉट ऑफ ग्रेट इनसाइट्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली द कल्चर बिहाइंड इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ बस ऑपरेटर्स एंड लॉट ऑफ बिजनेसमैन आर सक्सेसफुल बट वेरी फ्यू आर कल्चर्ड एज यू आर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सर। माय प्लेजर। नमस्कार।